Right. So in the last session, like we talk about consent and the various, parts of it, right? What is free consent and everything. Now, today we will be studying more related to, hospitals and doctors. So terminology of the law, how it is going to apply in the medical industry. So that we're going to study today. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay. So, Tanvir, like how we're gonna study? Like, I mean, you will be reading some of the part. I'll be explaining some of the part. That's how we will cover maximum. Ma'am, Nancy is calling me. Nancy's calling. Okay, take a call. Ma'am, she said she just reached home, so she will join in 5 minutes. No problem. No problem. Okay. So by the time we'll continue, she can join in between. Okay. Okay. Now, so this time, like I have tried to capture some of the important questions also that we have seen in the past question paper. So we'll try to study that as well. So in bits and parts, like we will be studying those topics. Okay. Good evening, Acha. ma'am. Hi Nancy, how are you? Ma'am, I'm fine. I'm sorry I'm late. I just reached my home. That's fine. That's fine. If you need 2-3 minutes to just freshen up, you can do that. We can Th- wait if you want. Thank you, ma'am. What are we up to studying? We are, see, we have not started yet. We were just discussing what we have studied last time. And like today, so what we are trying to capture today, this time, like we'll be covering some of the important terminologies of law and how it is going to apply. What is the application part in hospital industry for those, terms that Okay, we're going to study. And we'll okay, also be, capturing some of the important small questions or topics which has come in a way of question. We'll try to discuss that, study that, so that if you get any question related to it, you'll be able to answer. okay, Okay. ma'am. You want me to start, or you want me to wait for another 2-3 minutes, so that you can have Ma'am, it? just 2 minutes. Okay, no problem.
Hi. Shall we start, Nancy? Tanvir? Tanvir, Yes, ma'am. you there? Yes, ma'am. Acha, ठीक है. Nancy was about to join, but I don't know, maybe she has some network issue. Okay, so let's do what is the purpose of Indian Medical Council Act 1956. This is very, very important. So from medical council perspective, so this act particularly works on maintaining the medical register for India and for matters connected with. So how it says that it is an act to provide for the reconstitution of the Medical Council of India and the maintenance of a medical register for India and for matters connected therewith. Means whatever reconstitution we are doing related to the medical acts, which is applicable in hospital industry. So whatever changes, whatever reconstitution is being done on the medical council, that will be recorded by Indian Medical Act 1956. So it is the act according to which we make the records of all the changes or the reconstitutions for the Medical Council of India. Okay. Okay, ma'am. What is meant by maintenance of a medical register? Am I audible?
Yes, but ma'am just left. I think she has a network issue. She has started teaching or not? She had already started, but not much, like 2 lines. He has left now. Am I audible? Yes, ma'am. ओके सो कोई भी अगर चेंज आएगा, कोई भी चेंज आता है तो अकॉर्डिंगली द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द न्यू लॉ और द न्यू अमेंडमेंट विच हैज बीन अमेंडेड विल बी एप्लीकेबल, राइट? जैसे आपके एग्जाम्स में होता है कि जैसे पहले का पैटर्न ये था, उसके 2 साल बाद ये पैटर्न आ गया, तो अब आपके जब नए पेपर हो, आपके एग्जाम्स होंगे तो आपके यहाँ पर जो लेटेस्ट पैटर्न है वो फॉलो होगा, या अगर कोई नया पैटर्न आगे आने वाला है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी तो वो फॉलो होगा, राइट? इन द सेम मैनर इट इज एप्लीकेबल टू अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, गॉट इट? Yes, ma'am. But ma'am, the screen is not visible. स्क्रीन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ मोमेंट. Visible now? Yes, ma'am. Okay. Now next we say State Medical Council. Like what are the functions of the State Medical Council? Nancy, can you read for me, please? Ma'am, From this establish and maintain uniform. okay, ma'am. Functions of the council: establish and maintain uniform standards for undergraduate medical education, Right. regulate postgraduate medical education and medical colleges accredited by it, recognition of medical qualifications granted by university or UGC in medical institutions in India. Right. So when we say council, State Medical Council, what are the functions? So when we say functions, that means what are the main important responsibilities that are being followed by the State Medical Council? वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जितना भी आपका ये मेडिकल एजुकेशन है, जैसे आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं या जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं या और कोई दूसरे रिकॉग्नाइज कोर्सेज हैं, उन सबको इस्टेब्लिश करना, रेगुलेट करना और उनको रिकॉग्नाइज करना, ऐसा उसके लिए पर्टिकुलरली, मतलब थिंक अबाउट इट कि पर्टिकुलरली काउंसिल क्यों बनाया गया है मेडिकल एजुकेशन के लिए? वैसे तो सभी सभी एजुकेशन के लिए आपका यूजीसी और ये सब चीजें अप्लाई होती हैं, बट when we talk about medical education, why do you think it's very important or it is very critical? Therefore, these regulations or these councils have been established to take care of these, the quality and standards of the medical education. Why do you think it's important? Ma'am, so that there are same protocols for every organization. There are, sorry, come again. Same protocols for every organization. Okay. Okay. Also, because medical education is very vital. It's very vital. The life of a patient depends on how good the doctor is. Right. Now you have completed. See, in other education or in other industry, you're dealing with objects. You're dealing with non-living things. Maybe you're dealing with money. That's the most important one, right? Max to max money. But here in medical education, you're dealing with the life of human beings, which is the most important. In fact, it's the most important creation in the entire universe, right? We say that, correct? So because we are here when we talk about the science education as an education stream, therein you start working on the procedures, the operations, the way outs, the treatments, which is going to apply on a human being, correct? Therefore, you're dealing with the life of human being, correct? Yes, Therefore, it needs to be controlled, it needs to be maintained, it needs to be balanced out so that there should not be any chance of loopholes, right? Whether it is undergraduate program, postgraduate program, whether it any other, any other program or medical courses related to medical industry. Okay? Got okay, it? Yes.
Okay. Now this is again very simple. Tanvir, read it out for me. What is Code of Medical Ethics in India? Tanvir, What is Code of Medical Ethics in India? can you read it out? A physician shall uphold the dignity and honor of his profession. Hmm. And the The prime Hmm. object of the medical profession is to render service to humanity. Hmm. Reward or financial gain is a subordinate consideration. Hmm. Whosoever chooses his profession assumes the obligation to conduct himself in accordance with its ideals. Correct. Correct. So here, when we talk about medical ethics or a code of ethics or the mechanism of ethics in medical industry, so it is a physician or a doctor or a practitioner who shall uphold the dignity and honor of his profession. Here, the prime object will be to provide the service, to render the service to the humans or reward or whatever gain is there, which is planned as per the service protocol, right? Like for example, if the service protocol says that a treatment will be given to cure a particular disease, so that should be done as per the conduct. For example, if it, and when we talk about the financial gain, what do you think, what can be the financial gain in medical industry? Any idea? See, you do provide, I mean, in medical industry, you do provide services like doctors provide the treatment, they write the prescription, they diagnose the disease, but other things are also there in the medical. For example, selling medicines. That will, Farm. that is Yes, something wherein you are just giving the medicines as per the prescription of the doctor, wherein you will be making a gain of out of it, profit out of it, right? Monetary gain, correct? Yes, ma'am. है ना? So that is there. It has to be. It is as per the protocol, as per the requirement, as per the procedure of the business, right? But that is also related to medical industry. ठीक है? अच्छा. Now, sometimes you get a question like, what are the different medical laws in India? है ना? तो ये है आपके पास, आपका एक मेंटल हेल्थ एक्ट होता है 1987 के हिसाब से, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड मेडिकल प्रोफेशन, एनवायरमेंटल एक्ट एंड रूल्स, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट एंड रूल्स। क्योंकि अभी क्या हो गया ना, पहले बहुत ज्यादा ऑर्गन डोनेशन नहीं होता था, राइट, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होते थे, करेक्ट? Nowadays it is quite active in terms of the procedure that is being provided to the patients, correct? So उसके लिए भी एक प्रॉपर एक एक्ट बनाया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। देन फार्मेसी का तो 1948 में इस्टेब्लिश हो गया था। देन बायोमेडिकल वेस्ट, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है, उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके भी रूल्स है 1998 के हिसाब से। देन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, देन प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ठीक है? अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो एक्ट्स हैं इसके लिए 2-3 लाइनों का होमवर्क यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर ओन। ओके? okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. This part, I think this question we have studied last time. तनवीर, हमने पढ़ा था ये वाला, relationship between doctor and patient. No, ma'am, I don't think so. अच्छा, ठीक है. Okay. 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 Now, what do you think? What is the relationship between doctor and patient? आप एक बार पढ़ के भी बता सकते हो. You can take 2 minutes and then explain.
Yes, Tanvir. Or maybe Nancy, if any one of you want to explain. Yes, ma'am. Now that I go through it, I remember that we covered it last time. We did that, right? Yeah. Oh, So, Nancy is there? Nancy? Ma'am, Acha. Nancy, you've started this? You've read? yes, Acha. yes, Okay, so basically here what we're trying to say, see in all the relation between the patient and the physician or a doctor and a patient, it is based on trust, right? Trust. Right, because you do, I mean, patient doesn't know whether the treatment which has been given to him is appropriate or not, is actual the correct one or not, right? Because he is not from yes, that technical background, correct? So yes, here a patient comes with a trust factor to a doctor in order to get the treatment done, right? And here, this is very, very important. I mean, if you read this, which gives rise to physician ethical responsibility to place patients' welfare above the physician own self-interest or obligations to others, right? अपने इंटरेस्ट से ऊपर आपको पेशेंट का इंटरेस्ट रखना है, आपको ऐसा नहीं करना है, like I mean doctor should not be doing like this wherein he is unnecessary asking for more visits to the doctor so that he can make money. No, he should try to give the genuine treatment to the patient, and if required then only the next visit should be planned. Okay. Okay. Now, why I'm putting a like highlighter here, because in other industry also, like when we work, we have one point in the principles of management, if you remember, wherein you have to keep your organization interest above your personal interest. If you have studied that, one of the FIOL's principle is there. So वहां पर भी ये बोला जाता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको पर्सनल से ऊपर आपके जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसको ऊपर रखना है, करेक्ट? सेम वे मेडिकल इंडस्ट्री में भी पेशेंट्स का आपको वेलफेयर, आपको डॉक्टर्स को या फिजिशियंस को या जो भी उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको अपने सेल्फ ओन इंटरेस्ट से अबव उनका इंटरेस्ट रखना है, तभी वेलफेयर होगा, ठीक है? करेक्ट? Or yes, then ma'am. of course you have to give a sound medical judgment to them on patients, so that उनका जो treatment है या welfare है वो properly हो पाए, ठीक है? अच्छा, then there are like 4 types of doctor-patient relationship, which says trust, knowledge, regard, and loyalty. These are the 4 important elements. You can, I think, probably write further on this basis the some of the examples or some of the instances that you can put it here in terms of the explanation. Then how do you establish a good doctor-patient relationship? Of course, you have to demonstrate empathy and sympathy both. What is empathy and what is sympathy? What is the difference between them? Empathy and sympathy? Anybody? क्या होता है? sympathy is kind of emotional attachment, like Correct. emotional support, Yes. and empathy is like in regarding to trust or loyalty. Okay. Right prescription or something. Tanvir? Ma'am, empathy is like feeling the same thing what somebody else is going through, or somebody is going through. And sympathy is like what Nancy said, giving emotional support. But Okay. empathy is putting oneself in their shoe. Their shoes. Okay, got it. So I'll make you understand. Sympathy में क्या होता है? Like you have the emotional attachment, right? So आप उसी situation में emotional हो जाते हो. Empathy में क्या होता है? That you need to understand their situation, but you don't flow yourself. You don't carried away in that situation. Rather, you understand their situation and you try to provide a solution. ठीक है? जैसे हम लोग हैं, अभी घर में कोई बीमार होता है, आपके खुद के घर में कोई बीमार होता है, आप भी उनके साथ इमोशनल हो जाते हो और उसके दर्द में आप भी रोते हो। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं? दे एम्पैथाइज, दे अंडरस्टैंड
they go through, they understand your both emotional and physical issue, right? Medical issue, and then they give you the solution. You understand? Or if, for example, if you're going through some medical stress, or maybe in your family, somebody who's close to you is going through some medical stress or maybe depression, probably that depression will impact you as well, because you will have a sympathy with that person as you are emotionally attached. But then if you take your, your family member, that family member or a friend, whosoever is going through that depression, to a psychiatrist would understand, he would, analyze your situation, your problem, your your issue, and then he would suggest the solutions. Getting my point? मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और आपके साथ आपका कोई जो आपके साथ इमोशनली अटैच है, वो आपको आपके साथ उसको सिंपैथी हो जाएगी, लेकिन आपके प्रॉब्लम का, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आते हो, I may not be, having sympathy with you. Rather, I would empathize. I would have empathy with you to understand your problem, and then I can help you with the situation because I analyze and I understand your problem. ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है आपका मेडिकल स्टेट क्या है, आपका फिजिकल स्टेट क्या है, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, एंड आई कैन हेल्प यू विद द सॉल्यूशन. तो दैट इज एम्पैथी. ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अभी? सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. सिंपैथी में जनरली हम भी उस चीज में बह जाते हैं, लेकिन एम्पैथी में नहीं. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. देन डोंट अपीयर रश्ड. आप जल्दी में नहीं रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, डिसीजन मेकिंग को शेयर करेंगे, फिर कल्चरल डिफरेंसेस को भी रिकॉग्नाइज करेंगे. ये इंपॉर्टेंट तरीके हैं एक बेटर रिलेशनशिप डेवलप करने के साथ आपके पेशेंट्स के साथ. ठीक है, और ऑब्वियसली बिहेव कैसे करना चाहिए. डॉक्टर्स और फिजिशियंस शुड बी गुड लिसनर्स, एम्पैथाइज कर पाए, उसको ट्रीटमेंट दे पाए. अच्छा, ये सारी चीजें आपका वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, ये आपका अच्छा बिहेवियर बनाएंगे पेशेंट्स के साथ. अच्छा, नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट इज व्हाट इज मेडिको लीगल प्रैक्टिस. देखो अभी क्या हुआ है, जैसे जैसे मेडिकल इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है ना, इंश्योरेंस सेक्टर इवॉल्व हुआ है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, प्लान्स, ये सब चीजें भी आ गई जिसमें देखो जिसमें आपके पॉलिसीज बेची जा रही हैं. हॉस्पिटल्स को और भी ज्यादा कॉर्पोरेट फॉर्म में लेके आ गए हैं, या उसको और भी ज्यादा लैविश कर दिया गया है, डिफरेंट प्रोग्राम्स भी और ऐड कर दिए गए हैं, राइट. तो ये सारी चीजें की वजह से मेडिकल इंडस्ट्री में भी लीगल प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग किया गया है, so that there should be not be any wrong practices happening in the medical industry. ठीक है, और फिर एक नया आपका यूएस टर्म आया है which is known as medico legal practice. टर्म है जो दो प्रोफेशन को इकट्ठा करती है, या फिर अमेलगमेट करती है, या फिर इनकॉर्पोरेट करती है, which is medicine and law. मेडिकल इंडस्ट्री और लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस को या लॉस को आप मेडिकल इंडस्ट्री में भी अप्लाई करने लग गए हैं, विच इज नाउ कमिंग विद द टर्म मेडिको लीगल प्रैक्टिस. ठीक है, करेक्ट है. अब कुछ चीजें आपको आगे समझने को मिलेंगी जो लीगल इंडस्ट्री में है और वो मेडिकल इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई होती हैं, वो देखेंगे. जैसे आपका ये कंज्यूमर का डेफिनेशन हो गया, या कौन कंज्यूमर होगा, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर सिर्फ वो नहीं है जो आटा दाल चावल कंज्यूम करे. आपके कंज्यूमर का मतलब है वो इज टेकिंग अ ट्रीटमेंट. और कई बार ह्यूमन लाइफ के साथ ये भी होता है, सम टाइम दे पास अवे, राइट, ह्यूमंस पास अवे, दे go through some serious or critical medical state, and then probably they may not get through with the treatment, right. तो वो वहां पर कौन कंज्यूमर होगा, या अगर किसी तरह का कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो उसको कैसे, कौन उसके लिए लीगली लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता, ये सब आपको लीगल स्टेट में पता चलेगा जो मेडिको लीगल प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है. ठीक है, अच्छा. सो medico legal practice is a term which incorporates the basics of two sister professions, that is medicine and law. And everybody talks about the law, but few aside from lawyers, judges and law teachers have more than the vaguest notion of what constitutes law. Obviously सबको नहीं मालूम होता, सिर्फ ये
थोड़ा बहुत लॉयर्स वगैरह को ही मालूम रहता है, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री में या जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसलिए मेडिको लीगल प्रैक्टिस बना है। ओके, सो इसका गोल क्या है, इसको क्यों बनाया गया है? सो इट इज टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ कॉज, टाइमिंग एंड मैनर ऑफ डेथ फॉर एडजुडिकेशन बाय द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यहाँ पे समझ में आ रहा है? Can you understand this? Guys, Yes, ma'am. हाँ, एक ये समझ, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बोल रहे हैं कि जो हमें इसका ऑब्जेक्टिव ये देखना है, एविडेंस निकालना है कि क्यों, किस समय और कैसे डेथ हुई है। अगर कोई क्रिमिनल केस हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, तो बॉडी को वहां से रिमूव करने से पहले आपने जैसे सीआईडी देखा होगा, सीआईडी भी होता है ना, द सीआईडी टीम गोज देयर एंड देन चेक ऑल द एविडेंसेस, राइट, फाइंड आउट द विटनेसेस। देखा है आप लोगों ने सीआईडी सीरियल कभी? सोनी पर आता था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. I was addicted to it. हाँ, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सारे एविडेंस, सो बिफोर द बॉडी इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेस, दे गो देयर एंड दे सी दी सर्कमस्टांसेस कि किस सिचुएशन में वो है ना, एंड देन वहां पे किस तरह के एविडेंसेस मिल सकते हैं, किस तरह के विटनेस, वो सारी चीजें आपकी जो आपके लॉ के केसेस हैं, जहाँ पे क्रिमिनल किलिंग है, वहां पर उसको स्टडी करने के लिए भी आपका ये मेडिको लीगल एक्ट बना है। ठीक है, ये एक मैंने लिंक भी दिया हुआ है इसके नीचे, यहाँ पर इस लिंक को भी एक बार पढ़ लेना, मतलब यहाँ से आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा थोड़ा पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये तो हम लोगों ने क्रिमिनल केसेस की बात करी है, मगर ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर सम टाइम पेशेंट फील दैट देयर पर्सन और द the patient was not been dealt properly by the doctor, or maybe some wrong practice were been applied. In that case also, this act will be applicable to understand if there are any provisions as per the Medical Council Act 1956, to understand or to to entertain any complaint from the patient, or to take action against the medical practitioner in case any negligence has been committed, and to award any compensation etc. मतलब अगर कोई गलत ट्रीटमेंट दे दिया गया है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना, एक्शन लेना, और अगर कोई कॉम्पनसेशन बनता है तो वो करना, या वो क्लेम करना और वो उसको दिलवाना या वो उसको मिलना, दैट इज एज पर दी प्रोसीजर और द मेथोडोलॉजी मैकेनिज्म मेंशन इन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। ठीक है, clear? So this act is not only applicable for the criminal cases, but also for the treatments and for the practices which has been applied on the patients by the doctors. Clear? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, ये बोल रहे हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली अगर आप देखोगे ना, जैसे कई बार हमें क्या होता है ना, कंज्यूमर फोरम में जाते हैं लोग, जब कोई गलत प्रोडक्ट मिला हो, या जो प्रोडक्ट की सर्विसेज एड में दी गई हैं, या उसके Yes, पैकेज ma'am. पे दिया गया है, कोई पैकेज पे प्रोडक्ट जैसे बताया जाए वो सेम टू सेम वैसा नहीं निकला, so we can complain हाँ, in the गो टू कंज्यूमर फोरम, राइट। ऐसे ही इसमें बताया गया कि क्या जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, क्या वो हॉस्पिटल में एप्लीकेबल है या नहीं। तो इसमें ये एक केस था, चंद्रचूड़ और हिमा कोहली केस वाला, बॉम्बे हाई कोर्ट में गया था। इसके वर्डिक्ट से ये निकल के आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निकाला था वर्डिक्ट कि हेल्थ केयर सर्विसेज
are also included in Consumer Protection Act. मतलब ये हेल्थ केयर सर्विसेज को हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से एक्सक्लूड नहीं करेंगे. दैट मीन्स वॉट एवर इज बीन कमिटेड बाय द healthcare professional, be it a doctor, be it an insurer planner, be it a nurse, or be it any other, medical practitioner, whatever services he or she has mentioned in the code of conduct, that has to be there. And if it is not there, it can be claimed, or it can be registered as per the मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956. आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इसमें अप्लाई होगा, हॉस्पिटल में भी अप्लाई होगा. इसीलिए हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे ना, क्वालिटी के चेक्स और वो नाव एक्रेडिटेशन और वो सब चीजें जो हम लोगों का होता है ना, NABH वाला, वो सारी चीजें इसीलिए अप्लाई कर गई हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स के लिए भी लॉ बना दिए गए हैं. ठीक है, करेक्ट है? Yes, ma'am. ओके. देखो अब इसमें ये भी इन्होंने बोला भी हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसको पढ़ोगे एक बार. नैन्सी, कैन यू रीड दिस फॉर मी? व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन हॉस्पिटल? नैन्सी Yes, पढ़ो. ma'am. पढ़ो बच्चे इसको जोर से. The major change has been in the form of Consumer Protection Act, formulated in the year 1986. The medical profession has also been brought under the purview of this act since 1995. Right. All patients making payments for availing health services have been brought under the definition of consumer by this act. Correct. Correct. So what does it says? कि जितने भी पेशेंट्स हैं जो भी पैसे वो दे रहे हैं मेकिंग पेमेंट्स फॉर अवेलिंग हेल्थ सर्विसेज, वो उनका जो ट्रीटमेंट है दैट विल डेफिनेटली कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ठीक है, मतलब जो भी उनको सर्विसेज मैंने बताया ना, जो भी उनकी सर्विसेज कमिट की गई हैं एज पर द पेमेंट, एज पर द फीस चार्ज फ्रॉम देम, दैट हैज टू बी देयर. और अगर वो नहीं प्रोवाइड करी जाती है तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हॉस्पिटल पे एप्लीकेबल होगा. ठीक है, अब इसके कुछ हाइलाइट्स हैं जो लास्ट मेरा 2019 के हिसाब से जो अमेंड हुआ है वो हमारे पास यहाँ पर नोटेड है. What are the main highlights of Consumer Protection Act 2019? Need for the new act, details, right of the consumers, new definition of the consumer, Central Consumer Protection Authority, Consumer Disputes Redressal Commission, e-filing of complaints. ये सारे ना ये कैटेगरीज, मतलब ये मेन उसका जिस पार्ट्स होंगे इसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसमें ये सारी चीजें आएंगी. आपकी कंप्लेंट्स की फाइलिंग की कैटेगरी बनेगी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड पेनल कॉन्सिक्वेंसेज, क्या डॉक्टर्स लाइबल होंगे इस प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, हाँ तो यस. ये सारी चीजें हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएंगी. ठीक है. अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन लास्ट में ऊपर डाला हुआ है ना कि आर डॉक्टर्स लायबल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्या डॉक्टर्स भी इस वाले एक्ट के अंडर आते हैं? तो हम बोल रहे हैं यस आते हैं, लेकिन सारी चीजों के लिए नहीं, इसमें उस चीज के लिए नहीं आएंगे. ओके, डॉक्टर इज नॉट लायबल फॉर एवरी इंजरी सफर्ड बाय अ पेशेंट, ही इज लायबल फॉर ओनली दोज दैट आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी. हेंस once the existence of duty has been established, the plaintiff must still prove the breach of duty and the causation. समझ में आया यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? यहाँ पे Yes, बोल ma'am. रहे हैं कि हाँ, क्या तनवीर, क्या समझ में आया यहाँ पे? मैम मतलब पेशेंट जो भी इंजरी सफर कर रहे हैं, हर किसी इंजरी के लिए डॉक्टर लायबल नहीं होगा. डॉक्टर्स, लेकिन डॉक्टर की जो ड्यूटी है अगर वो ब्रीच किया उसने तो उसके लिए वो लायबल है. हाँ, या फिर उसकी जिसका वो ट्रीटमेंट दे रहा है, सिर्फ ही लायबल फॉर दैट ओनली. और पेशेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी एग्जैक्टली, ब्रीच की. ये दैट्स द कैच कि पेशेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ड्यूटी ब्रीच हुई है जिसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं. राइट, तो इसको पूरा आपको प्रूव करना पड़ेगा. जैसे कोर्ट में भी अगर आपको कोई केस है, आपने किसी का वो डाला है, तो प्लेंटिफ को हमेशा प्रूव करना पड़ता है कि भाई मेरे साथ ये हुआ है या फिर ये क्राइम हुआ है, और दिस इज अ क्राइम दैट नीड्स टू बी
Sorry, ma'am, you're not audible. Guys, sorry, that was a technical disconnect. One moment, I'm sharing my screen back to you. Guys, am I audible? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है. One moment, huh? Like my entire system was closed. One moment, huh? Sharing.
Tanvir, my screen is visible. No, ma'am. No, ma'am, it was visible for a second. Now, Yes, ma'am. okay. This one started when? This wave started, this wave started, okay. This wave started. Okay. ठीक है, right? So the last one is like, what is the punishment of medical negligence? अगर कोई medical negligence होता है, तो उसका क्या punishment है ना? क्या रहेगा? Like whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others shall be punished with, yeah, this is important, imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both, right? जो भी आपका मतलब एज पर द लॉ बोला गया है, 2 या 2 साल से ज्यादा की जो भी आपकी पनिशमेंट रहेगी, उसका जेल रहेगा, इम्प्रिजनमेंट रहेगी वो, या फिर उसका 1,000 रुपए या उससे ज्यादा जो भी फाइन होगा. कॉम्पनसेशन इज डिफरेंट, फाइन इज डिफरेंट. ओके, आपका एज पर दी डिफरेंट कैटेगरीज आपके फाइन डिफाइंड है, पर मेजरली 1,000 रुपए का फाइन मेंशन है, 1,000 या 1,000 से ज्यादा जो भी बनेगा उनमें से, या फिर दोनों भी. डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉज हुआ है, किस तरह का मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, उसके बेसिस पे ये फाइन या ये पनिशमेंट डिफाइन की गई है. ठीक है. उसके बाद कह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मेडिकल नेग्लिजेंस हैं जो मेडिकल नेग्लिजेंस के कैटेगरी में आ जाता है, राइट? तो डिफरेंट कैटेगरी, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेजरली है आपका, एक तो मिस डायग्नोस, जहाँ पे आपने कोई डायग्नोस नहीं किया इशू को, कोई माल प्रैक्टिस हो गई है, फिर कोई डायग्नोस करने में डिले है, नेग्लिजेंस है, फेलियर है, या कोई सर्जरी के टाइम पे माल प्रैक्टिस हो गई, कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस हो गई, कुछ बर्थ इंजरीज हो गई, मतलब बेबी बर्थ के टाइम पर आप जब उसको ट्रीट कर रहे हैं, या फिर आप उसकी मदर को ट्रीट, उस टाइम पर उनको कोई इंजरी हो गई, दैट वुड आल्सो कम अंडर मेडिकल माल प्रैक्टिस और मेडिकल नेग्लिजेंस. और उसके बाद अगर आप कोई डिफेक्टिव मेडिकल डिवाइस यूज कर रहे हो, तो दैट विल आल्सो कम अंडर मेडिकल नेग्लिजेंस. ठीक है. बाकी तो बहुत तरह के हो सकते हैं कि डॉक्टर का लेट आने से, बोलने का तो बहुत चीजें, लेकिन जो डिफाइन करी गई है एज पर द मेडिकल एक्ट, वो ये आपका ये है, कोई आपका मिस डायग्नोस हो गया, या आपने कोई डिले मारा है डायग्नोस करने में, या कोई नेग्लिजेंस हुआ है ट्रीटमेंट में, कोई सर्जिकल माल प्रैक्टिस हुई है, बर्थ इंजरी है, कोई मेडिकल डिवाइस आपने गलत यूज कर दिया, तो तब आपका जो है मेडिकल माल प्रैक्टिस या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस कंसिडर होगा. ठीक है. क्लियर गाइस? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट इज ये मेडिकल कम्युनिकेशन और एथिक्स, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर, है ना, बिकॉज इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक. ठीक है. तो बायोमेडिकल वेस्ट और ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके. Okay, ma'am. एनी क्वेश्चन सो फार? No, ma'am. नो. ज्यादा समझ में आ गया या बिल्कुल समझ में नहीं आया? समझ में आ गया. आ It's गया. not all clear, ma'am. इट्स नॉट ऑल क्लियर, इट्स क्लियर, राइट? Yeah. गुड.
ठीक है, all right. So then see you guys in the next class, then we'll connect, okay? अच्छा, ये what is a suitable best suitable time for you? This one or maybe पहले कैसे करते हैं? Weekdays after 7 and in weekends, Sundays, on Sundays, anytime. Sundays anytime. ठीक है, Yeah. ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। संडे को अगर हम थोड़ा मॉर्निंग में रख ले चलेगा? Yes, ma'am, no issue. Early morning. अर्ली मॉर्निंग 7 बजे रख दूं, उठ जाओगे? Yes, yes, No issue, ma'am. ma'am. नो इश्यूज, ठीक Yeah. है, ऐसे प्लान कर लेते हैं। ठीक है, वेरी इनफ। Okay, चलो, ऑलराइट, थैंक यू गाइस, बाय। goodbye. Bye, ma'am.